हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। प्रीवियस वीडियो रे हमें कोन कोन पढितले पिला माने? प्रीवियस वीडियो रे हमें पढितले कोन ऑब्जर्वेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ और लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ओके, सेतिर हम कोन रिजल्ट पाउथले F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर, जोटा कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को से कोन करथला, से ओबे करथला। ओके, तो टुडे वी विल स्टार्ट ओके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, the first write down superposition principle. Superposition principle. Okay, a superposition principle and force among multiple charges, and ताकू भी हमें कहू कौन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कौन कहू छे? फोर्स among multiple charges, force among multiple charges. So what is the definition of superposition principle? Okay, write down: when a number of charges are present, the total force on a given charge is equal to the vector sum of the forces due to the remaining other charges on the given charge. So this is the principle of superposition. Okay, so when a number of charges are present, the total force on a given charge is equal to the vector sum of forces due to remaining other charges on the given charges. Okay, this is a coordinate system. Okay, this is x-axis, this is z-axis, this is y-axis. Okay, तो ठीक कोन बहुत गुडे नंबर ऑफ चार्जेस एठी नबा। ओके, बहुत नंबर ऑफ चार्जेस नबा, मन को एटा q1 चार्ज, एटा q2 चार्ज, एटा q3 चार्ज, एटा q0 चार्ज, एटा तुम्हारा qn चार्जेस। ओके, एंड एटा तो o ओरिजिन o एंड मो ओरिजिन o रो सब चार्ज को कोन कनेक्ट करली। ओके, ओरिजिन o रो मो q3 को कनेक्ट करली, ओरिजिन o रो मो q0 को कनेक्ट करली, ओरिजिन o रो मो qn नंबर ऑफ चार्जेस को कनेक्ट करली। सो तार पोजीशन वेक्टर कोन हेजबो? q1 रो पोजीशन वेक्टर हेजबो तुम्हारो r1 वेक्टर, q2 रो पोजीशन वेक्टर हेजबो r2 वेक्टर, q3 रो पोजीशन वेक्टर कोन हेजबो r3 वेक्टर, q0 रो पोजीशन वेक्टर कोन हेजबो r0 वेक्टर, एंड qn रो पोजीशन वेक्टर हेजबो rn वेक्टर। ओके, तो एठी n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट अछंती, q1 q2 q3 q0 एमते qn नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट अछंती। ओके, सो राइट डाउन, कंसीडर number of point charge q1 q2 q3 up to qn having position vectors r1 r2 r3 up to rn vector respectively. ओके, तो हमें कौन कले देखो एठी हमें q1 q2 q3 एमते कोन rn जे हमें लिखिछु n ए q1 चार्ज q1 रहला r1 वेक्टर, q2 रो r2 वेक्टर, q3 चार्ज रो r3 वेक्टर एमते qn चार्ज पे rn वेक्टर हमें पोजीशन वेक्टर डिनोट करछु। ओके, let Q naught be the test charge,
Q naught with the test charge means कौन पिला हमने small charge. Test charge means small charge, okay, having position vector r naught vector, okay. So कौन है देखो पिला माने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कौन कहूची when a number of charges are present अछि the total force on a given charge is equal to the vector sum of forces due to the remaining other charges on the given charge. से कौन जदि तुम्हें लेट मने करो Q naught चार्ज तुम्हें नहीं छो Q naught चार्ज ऊपर तुमको बे शो करिवार अछि कोन टोटल फोर्स केते पडुछि Q naught ऊपर तो कोन करबो तुम पिला माने फास्ट कोन करबो Q1 पई Q naught ऊपर केते फोर्स पडुछि देन Q2 पई Q naught ऊपर केते फोर्स पडुछि Q3 पई Q naught ऊपर केते फोर्स पडुछि Qn नंबर पई Q naught ऊपर केते फोर्स करूछि हमें फास्ट बाहर कर दबा कूलम फोर्स पके कि कूलम फोर्स और टू बॉडी ऊपर ही डिपेंड करे तो फर्स्ट कूलम फोर्स अप्लाई कर दबा फर्स्ट कोन Q1 एंड Q naught पे केते कूलम फोर्स बाहर कर दबा Q2 एंड Q naught पे केते Q3 एंड Q naught पे केते एंतिया Q naught Qn एंड Q naught पे केते कूलम फोर्स हमें बाहर कर देले देन कोन करबा वेक्टर सम हमें करबा समस्त करो ओके तुमर एटा होची तुमर कोन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओके वेक्टर सम करबार अछि तो देखो लेट्स सी let f01 vector f02 vector f03 vector be the forces acting on the given charge Q naught due to charge Q1 Q2 Q3 up to Qn respectively, then the total force acting on Q naught is given by कौन हम को F vector total force F equal to F01 vector plus F02 vector plus F03 vector plus dot up to F01 vector, and we can write summation of I equal to 1 to n F0 I vector I जगह तुम 1 2 3 4 एमता पुट करी पारिबो तो दिस इज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओके तो कोन करबार छी F01 बाहर करबार छी मींस कोन ए 0 एंड 1 भितरे माने Q1 चार्ज ऊपर फास्ट कूलम फोर्स बाहर करबार छी सेमता 0 एंड 2 भितरे कूलम फोर्स बाहर करबार छी 0 एंड 3 भितरे 0 एंड 4 भितरे एमता n जे बाहर करबार छी n समस्त कोन वेक्टर सम करबार अछि तो दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओके तो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कौन जानले को by using the principle you can write by using the principle of superposition okay by using the principle of superposition we can apply Coulomb's law to find net force on a charge due to a group of point charges okay so by using principle of superposition principle को यूज करके you can apply Coulomb's law to find out net force on a charge due to group of point charges okay तो जदि तुमको कोन okay तो सॉरी देखा जाउनी देखो हला तो कोन हला by using principle of superposition we can apply Coulomb's law to find net force on a charge due to group of point charge means कोन जदि तुमको group of charge दिया जाई छी गिवन okay एटा group of charge दिया जाई छी गिवन okay group of charge दिया जाई छी तो तुमे कोन करिवो जदि group of charge दिया जाई छी तुमे
जदि क्यू नॉट उपरे फोर्स बाहर कर कहला तो इंडिविजुअली ताको कोन करबो पिला माने तुम इंडिविजुअली कोन करबो वेक्टर सम करया को पड़िबो ओके तो सहीटा तुम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओके देन नेक्स्ट वी गो फॉर कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो लेट्स सी व्हाट इज कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन okay continuous charge distribution okay so what is continuous charge distribution what is continuous charge distribution a system of closed space electric charge form a continuous charge distribution गोटे closed space electric charge जदि अच्छी ओके गोटे क्लोज्ड स्पेस इलेक्ट्रिक चार्ज अच्छी ताको हमें कहबा कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओके फर्स्ट राइट डाउन ए सिस्टम ऑफ क्लोज्ड स्पेस्ड इलेक्ट्रिक चार्ज forms a continuous charge distribution okay the system of closed space electric charge form a continuous charge distribution closed space हबा कथा closed space electric charge हबा कथा ताहेले जे कोन हबो continuous charge distribution हबो okay and a continuous charge distribution ता तुम कोन लाइन ही पारे लाइन रही पारे सरफेस रही पारे एंड वॉल्यूम रही पारे तीनटा कैटेगरी ताको डिवाइड करा जायछि देखो continuous charge distribution can be on a line okay line रे भी पारिबो on a surface रे भी पारिबो और the entire volume तो सरफेस कोन कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ही पारिबो सरफेस ही पारिबो एंड एंटायर वॉल्यूम भी ही पारिबो तो वन बाय वन हमें डिस्कस करी करी जीवा ओके तो फर्स्ट linear charge density तो व्हाट इज linear charge density okay let's see the linear charge density it is denoted by the symbol lambda okay lambda denoted by symbol lambda so what is linear charge density okay so you can write linear charge density is defined as charge per unit length so linear charge density is defined as charge per unit length okay means कोन मैं मन को linear अछि मन को गुटे rod example this is a rod it rod अछि ए rod कोन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कि अछि क्लोजली स्पेस्ड अछि एमतिया क्लोजली स्पेस चार्ज अछि तो कोन यूनिट लेंथ मन कर एटा गुटे यूनिट ए लेंथ गुटे यूनिट ओके ए यूनिट लेंथ रे चार्ज केते प्रेजेंट अछि सेटा होछि कोन लिनियर चार्ज डेंसिटी ओके चार्ज फॉर यूनिट लेंथ ए लेंथ रे केते चार्ज प्रेजेंट अछि ओके तो हमें केमते सेटा लिखिबा देखो पिला माने इफ ए चार्ज Q is uniformly distributed along a line okay a line रे कोन along line रे distributed charge अछि Q charge present अछि line of length L then the linear charge density is given by कोन है जबो को इधर लेंथ होची केते रे टोटल लेंथ होची L and the Q charge present अछि तो केते है जबो मते को linear charge density lambda equal to Q by L है जबो yes or no
कौन डेफिनेशन कौन कहूँ चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके गोटे यूनिट लेंथ रे केते चार्ज प्रेजेंट अछि सेटा हेला तुमर कोन लिनियर चार्ज डेंसिटी। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ लिनियर चार्ज डेंसिटी? सो द SI unit of lambda is कोन हिबो मते को Q, Q टा कोन चार्ज रो यूनिट कोन रे कूलम, कूलम पर कोन लेंथ रो कोन यूनिट मीटर, तो कोन हिबो कूलम मीटर इनवर्स। ओके एमता भी लिखि पारिबो और कूलम पर मीटर भी लिखि पारिबो। यस नो देन वी गो फॉर surface charge density. Okay, then we go for surface charge density. Surface charge density. Okay, surface charge density, and it is denoted by the symbol sigma. Okay, surface charge density is defined as charge per unit area. तो कौन कहूँ एटा चार्ज पर यूनिट एरिया थिबार थाए। सरफेस रो कौन थाए रे सरफेस रो एरिया थाए। तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी is defined as charge per unit area. ओके चार्ज पर यूनिट एरिया मीन्स कौन टू डायमेंशनल मन कर तुम ब्लैक बोर्ड गोटे तुम ब्लैक बोर्ड नहीं जाओ ब्लैक बोर्ड कौन अच्छी सरफेस अच्छी यस और नो ब्लैक बोर्ड सरफेस अच्छी मन कर ब्लैक बोर्ड तुम तो ये कौन तार सरफेस तो ये सरफेस रो कौन यूनिट एरिया रे मीन्स एटा छोटिया यूनिट एरिया मीन्स कौन मु छोटिया एरिया टे नहीं ये छोटिया एरिया रे केते चार्ज प्रेजेंट अच्छी मु सेटा बे कैलकुलेशन करूची। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेटा हला चार्ज पर यूनिट एरिया चार्ज पर यूनिट एरिया ये छोटिया सरफेस रे केते चार्ज प्रेजेंट अछि सेटा हला तुमर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ओके देन if a charge Q is uniformly distributed on a surface of area S, ओके ये टोटल एरिया टा मु S नहीं गली एंड चार्ज टा Q नहीं गली तो को कोन आइबो देन the surface charge density sigma is given by physical density sigma is given by कोन आइबो sigma equal to Q by S. yes or no it clear or not कहीं Q by S हला ना charge per unit area so what is the unit of surface charge density? Okay, the SI unit of so into sigma is कोन रे को Q टा कोन चार्ज रो यूनिट कोन कूलम ओके पर एरिया रो यूनिट कोन मीटर स्क्वायर तो we can write coulomb meter inverse coulomb. yes or no then we go for volume charge density. Okay, this is your last one, volume charge density. So what is volume charge density? So देखो third one is volume charge density and it is denoted by the symbol rho. Okay, rho. So what is volume charge density पिला माने volume charge density is defined as charge per unit volume माने गुटे यूनिट वॉल्यूम रे केते चार्ज प्रेजेंट अछि तो देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी is defined as charge per unit volume. Okay, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मन कर एटा गोटे फुटबॉल रे कोन अछि वॉल्यूम अछि ता भितरे फुटबॉल रो भितरे. ओके
तो कौन तो यूनिट वॉल्यूम रे छोटिया वॉल्यूम टे नेगली ए वॉल्यूम भितर केते चार्ज प्रेजेंट अछि सेटा में देखिबा चार्ज केते चार्ज प्रेजेंट अछि यूनिट वॉल्यूम रे ओके तो देखो ए पे चार्ज q is uniformly distributed throughout a volume v then the volume charge density is given by केते हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो इक्वल टू q by v यस और नो इट क्लियर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में छोटिया वॉल्यूम रे केते चार्ज प्रेजेंट अछि सेटा हला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी द SI unit of रो इज केते रे q रो केते कूलम और वॉल्यूम रो केते मीटर क्यूब ओके मीटर क्यूब तो वी कैन राइट कूलम मीटर क्यूब इनवर्स ओके तो एटा थिला हमर सर्फ कोन कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो तीनटा पार्ट फर्स्ट ला लिनियर चार्ज डेंसिटी सेकंड थिला हमर सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ओके एंड आम नेक्स्ट आम सब इलेक्ट्रिक फील्ड ओके एबे तुम एटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड रो तुम थ्योरी पार्ट सब कंप्लीट हो गला ओके तो नेक्स्ट क्लास रो आम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड रो सब प्रॉब्लम करबा जेति सब प्रॉब्लम अछि तुमरो ट्रायंगल प्रॉब्लम स्क्वायर प्रॉब्लम ओके कूलम ओके हमर कोन कूलम फोर्स रो प्रॉब्लम सब आम करबा ओके मतलब बहुत गुडे प्रॉब्लम आम डिस्कशन करबा जेते भी तुमरो पॉसिबल CHSE एंड CBSE एग्जाम पे ओके जेते सारा प्रॉब्लम पड़े तुमरो एग्जाम रे सब टाइप रो प्रॉब्लम आम डिस्कशन करबा नेक्स्ट 2-3 क्लास रे तुमरो ओके तो डियर स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस रे इस चैनल रे तुमरो वीडियो अपलोड हबो जदी वीडियो भल लागुची ताहेले वीडियो को बहुत मात्रा रे लाइक करबार छी शेयर करबार छी एंड सब्सक्राइब करबार अछि ओके सो आज रो लेक्चर को आम एटी एंड करबा पुणी देखा हबा आम नेक्स्ट वीडियो रे ओके थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।